people, welcome to Prep Elevate. Today we are going to discuss the CAT 22 slot 2 questions on PARASUMMARY. We already have one video up on the channel where we've discussed the slot 1 questions, and today we'll continue and discuss the slot 2 questions. Okay, so we had 3 questions per slot for PARASUMMARY in CAT 22. We are going to discuss all of them. Now the standard rule for PARASUMMARY is we are going to look for the comparatively better choice. So when we are given with 4 options and we are given this responsibility of choosing the option that perfectly captures the essence of the passage, we are supposed to look for an option which summarizes the paragraph the best out of the given 4 choices. कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि जो आंसर चॉइसेस है ना वो परफेक्टली डिस्क्राइब नहीं करते हैं, बट हमारा टास्क है बस ये फाइंड आउट करना कि जो 4 ऑप्शंस है हमारे पास उसमें से कौन सा आंसर चॉइस है जो सबसे सही फिट बैठता है और वही आंसर है. ठीक है, बस बस इतना ही याद रखना है हमें, नथिंग एल्स. सो आई स्टार्ट विद द स्किमिंग प्रोसेस. ठीक है, वर्ड्स, अर्लीस्ट सिटीज, ओके, इगैलिटेरियन लाइंस. ठीक है, कुछ तो थोड़ा डिफरेंट नया मुझे मिला है, लेट्स से अ लिटिल अनफेमिलियर प्रॉब्ली. देमसेल्व्स, emerged, indication, temple, palaces, evidence, रूलिंग क्लास. तो सी एडमिनिस्ट्रेटर्स है, रूलिंग क्लास के बारे में कुछ है, अर्लीस्ट सिटीज के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, अर्बन लाइफ, फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, इनइक्वालिटी, मे बी कुछ सोशल डिवाइड, सोशल क्लास के बारे में बातें होगी, इगैलिटेरियन पॉसिबिलिटीज. तो इगैलिटेरियन कहीं ना कहीं इस ब्रीफ पैराग्राफ में भी 2 बार देखने को मिला है, तो प्रॉबली वो एक की आइडिया हो सकता है हमारे पैसेज का. अभी ऑप्शंस में ना ऑप्शंस लुक डेंस. ओके, डेंस एज इन सारे ऑप्शंस लगभग मुझे ना सिमिलर लेंथ के लग रहे हैं. तो जब ऐसा होता है सो वी नीड टू बी लिटिल केयरफुल. बस कभी कभी ऐसा होता है कि जब बहुत ही छोटे ऑप्शंस होते हैं वो रिजेक्ट करने में इजी होते हैं बिकॉज ऑब्वियसली दे आर नॉट गोइंग टू पैक इन अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन. बट यहाँ पे प्रिटी मच दे लुक लाइक सिमिलर in terms of what kind of information they could pack in. Okay, so ठीक है, it looks like a good one to go ahead with. इसमें से भी कुछ words देखना है तो हम देख सकते हैं. Evidence, again see egalitarian, again administrator, ruling class. तो अगर आप skimming आपने वहाँ पे देखा होगा तो आप देख रहे हो कि similar words हमें मिल रहे हैं. So there is scope for confusion because कुछ ना कुछ idea तो हर question में मुझे दिख रहा है जो यहाँ पे discuss हो सकता है. Assumption, administrative structure, again hierarchical administration, palace, temples. ठीक है, more or less. अगर egalitarian का मतलब मुझे पता है so definitely this is something that I would like to attempt. अभी discuss करते हैं. Several of the world's earliest cities were organized along egalitarian lines. Egalitarian क्या होता है? Egalitarian means a system wherein it is believed that everybody is equal, so there is no class divide and everybody is entitled to the same opportunities. ठीक है, everybody should get the same opportunities and chances and everybody is equal. Basically we are all the same, we are all equal. That is the idea behind egalitarian. ठीक है, so several of the world's earliest cities, कुछ ऐसे cities थे पुराने टाइम में जहाँ पे ये फॉलो होता था. दे वर ऑर्गेनाइज्ड अलोंग egalitarian lines. In some regions, urban population governed themselves for centuries without any indication of temples and palaces that would later emerge. तो कोई ऐसा class divide नहीं था. The populations governed themselves and also there was no indication of temples and palaces. In others, temples and palaces never emerged at all. So कुछ ऐसे cities थे वहाँ पे स्टार्टिंग से तो टेम्पल्स एंड पैलेसेस नहीं थे या क्लास डिवाइड नहीं था, बट प्रॉब्ली दे लेटर एमर्ज्ड. और कुछ ऐसी भी सिटीज हुए हैं जहाँ पे टेम्पल्स एंड पैलेसेस कभी एमर्ज ही नहीं हुए. अभी टेम्पल्स एंड पैलेसेस क्यों डिस्कस कर रहे हैं हम? बिकॉज टेम्पल टॉक्स अबाउट लेट्स से इट गिव्स यू अ रिलीजियस इंडिकेशन एंड पैलेसेस दे टॉक अबाउट क्लास डिवाइड, राइट? द किंग्स एंड द क्वींस रिसाइड इन द पैलेसेस. सो अगर हम इगैलिटेरियन सोसाइटी की बात करें जहाँ पे सब इक्वल है तो कोई भी ऐसा स्ट्रक्चरल या हायरार्कियल डिवाइड नहीं होना चाहिए. ठीक है,
and there is simply no evidence of a class of administrators or any other sort of ruling class. Stratum is ruling strata, ruling class. यही हमने अभी डिस्कस किया. It would seem that the mere fact of urban life does not necessarily imply any form of particular organization. So we could assume that, just because it's an urban setting, it does not immediately translate into having some sort of political organization ruling over you, and it never did. That was actually never the intention, never the definition. Far from resigning us to inequality, the picture that is now emerging of humanity's past may open our eyes to egalitarian possibilities we otherwise would have never considered. So, if you have read a little bit of history, we were always taught that, in ancient times, this class divide was rampant. ये बहुत ही ज़्यादा एविडेंट था कि एक क्लास डिवाइड हुआ करता था. But author has, picked up probably some evidence, some learning, some knowledge, wherein he claims that in ancient times, at least in some of the world's cities, we are not talking about everything as a whole, so it's written about several of the world's earliest cities, there was no inequality as such. In fact, it presents a picture which shows us that there were egalitarian possibilities. Matlab, they believed in this principle of everybody is equal and everybody deserves equal chances and opportunities, and this is something that we would have never considered given the kind of information that we have been taught or we live with. करेक्ट. सो क्या क्या आइडियाज हमें यहाँ पे मिले रफली, अगर हमें डिस्कस करना हो, एक मेंटल समरी बनानी हो. एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड दिस वर्ड इगैलिटेरियन. काफी बार आया है. वी आर टॉकिंग अबाउट नो टेम्पल्स एंड पैलेसेस एग्जिस्टिंग. We are we are talking about there is no ruling class as such. We are talking about that, probably we are led to believe that there was some inequality in the past, but this paints a different picture. Basically यही key ideas है. अभी ऑप्शन में देखते हैं. Option A says, remember comparative analysis होगा, ठीक है. We now have the evidence in support of existence of an egalitarian urban life in some ancient cities where political and civic organization was far less hierarchical. Obviously यही हम डिस्कस कर रहे हैं. एक egalitarian urban life था कुछ एंशियंट सिटीज में जहाँ पे कोई हायरार्की नहीं थी. वाज नो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या सिविक ऑर्गेनाइजेशन. सो बेसिकली की आइडियाज तो यहाँ है, बट कंपेयर करेंगे, ठीक है. कुछ अगर हो सकता है कुछ ऐसा मिले जो बेटर लिखा हुआ हो इन एसेंस. Now, B talks about emergence of a class of administrators and ruling stratum transformed the egalitarian urban life of ancient cities to the hierarchical civic organizations of today. ये कहीं नहीं लिखा हुआ है. There is no comparison कि पहले क्या था और ये एक class of administrators जब picture में आए तो उसके बाद क्या transformation हुआ. Have we discussed about the transformation at all? No, we have not discussed. So ये तो out of scope है हमारे लिए, तो हम reject कर ही सकते हैं. Contrary to our assumption that urban settlements have always involved hierarchical, political, and administrative structures, ancient cities were not organized this way. दो चीजें हैं यहाँ पे जो हमें नोट करनी है. पहली बात तो ये कि मे बी की आइडिया ये सही बता रहा है कि अच्छा वी ऑलवेज अज्यूम दैट अर्बन सेटलमेंट्स दे हैव सम काइंड ऑफ हायरार्की, बट नाउ we've come to know that ancient cities were not organized this way. बट पूरे पैसेज में ना सारे एंशियंट सिटीज के बारे में डिस्कस नहीं हुआ है एज अ होल कलेक्टिवली. वी आर टॉकिंग अबाउट सेवरल ऑफ द वर्ल्ड्स एंशियंट सिटीज, जो कि ऑप्शन ए में स्टेटेड था कि वो सम एंशियंट सिटीज के लिए ट्रू है, जो ऑप्शन सी नहीं स्टेट करता है, ठीक है. अब इगैलिटेरियन वाज द कीवर्ड, वहीं से सारा डिस्कशन स्टार्ट हुआ था, उसी पे एक्सपेंशन था, उसी पे डिस्कशन था. वो होना चाहिए ना हमारे ऑप्शन आंसर चॉइसेस में. सी में वो आंसर चॉइस में नहीं है. वी आर नॉट फाइंडिंग द कीवर्ड हियर, तो इसीलिए आई एम रिजेक्टिंग सी फॉर ए. अब यही एक पोजीशन है जहां पे ए और सी में काफी लोग कंफ्यूज होके यू विल एंड अप मार्किंग सी. तो थोड़ा सा केयरफुल रह के, थोड़ा सा अवेयर रह के आंसर्स मार्क करने चाहिए. कीवर्ड एब्सेंट है और दिस इज टॉकिंग अबाउट ऑल एंशियंट सिटीज कलेक्टिवली, जबकि हमारे पास तो इंफॉर्मेशन सेवरल एंशियंट सिटीज का था एंड कंपैरेटिवली हमारे पास एक बेटर चॉइस है, ठीक है. इसीलिए आई एम रिजेक्टिंग सी फॉर ए. डी, the lack of hierarchical administration in ancient cities
can be deduced by the absence of religious and regal structures such as temples and palaces. ये तो पार्ट ऑफ द डिस्कशन है ना कि टेम्पल्स एंड पैलेसेस नहीं हैं, जो कि इंडिकेशंस होते हैं एक हायरार्की के, बट ये तो पार्ट ऑफ द डिस्कशन है. सो वी ऑलरेडी हैव अ चॉइस which summarizes the key ideas the best. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. Easy one, definitely. There is a scope for confusion between A and C, but if you are a little mindful, you'll be able to do it. Right? Next question. ठीक है. Okay, so pretty much similar length as the previous one. Options थोड़े से shorter हैं ऐसा लग रहा है मुझे. ठीक है, but देखते हैं, थोड़ी सी और skimming करने की जरूरत है शायद. Debates about behavioral control, age of big data, old war era anxieties. अच्छा, brainwashing, insidious manipulation, repression, काफी ही dark deep terms लग रहे हैं. टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी कोर्ट्स में है, सो मे बी कुछ तो दे आर डिस्कसिंग अबाउट प्रॉब्ली डीमेरिट्स ऑफ टेक और समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. या बिहेवियरल कंट्रोल. अच्छा, बिहेवियरल कंट्रोल के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, टेकिंग टेक एज द बैकग्राउंड. साइकोपॉलिटिक्स. अच्छा, हैंड वॉन्स ऑफ टारगेटेड ऑनलाइन कंटेंट, इन्फ्लुएंस, प्री रिफ्लेक्सिव. ठीक है, एक्सपोज्ड, लिबरेटेड, private lives to machine learning algorithms. ठीक है, data. Okay, so maybe how is tech utilizing our data, or rather let's say misusing data, कुछ भी हो सकता है. Digital entrepreneurs, disaffiliation, disconnect, polemics, solitude, disconnect. अच्छा, ऐसा नहीं है कि वर्ड्स बहुत डिफिकल्ट हैं, but just that the way in which it is presented, it looks a little dense to me, right? Abhi, this is to each his own. If you are somebody who is really comfortable with these terms, maybe ye aapko easy bhi lag sakta hai, but I think on a very generic basis, if I have to stay, then the previous one had easier words, right? I'm just doing a comparison that way, but theek hai, I think this is also doable, right? बहुत सारे difficult words नहीं है, here and then we have words. अभी पैरा समरी में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि हो सकता है कुछ वर्ड्स आपको नहीं भी पता हो, बट मे बी इन एसेंस उनका यूटिलिटी उतना ज़्यादा हो भी नहीं आपके आंसर में. सो डोंट रिजेक्ट पैसेजेस दैट वे. ठीक है, बस एक इस पैरामीटर पे. अभी ऑप्शंस में देखते हैं. फ्रीइंग अस, एनस्लेविंग अस, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन. ठीक है, बिग डेटा, पर्सनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल. This has surfaced, resurfaced. Okay, privacy. Privacy is at stake. Artificial intelligence, influencing behavior, role of tech. Why, like reminiscent, manipulated during Cold War. Okay, more or less, it's about tech and how it is, let's say, influencing our behavior, and also about big data, right? How our personal information is exposed on social platforms. We in detail, in depth padhenge. Many of the debates about behavioral control in the age of big data echo Cold War era anxieties. So Cold War में क्या क्या होता था? There's brainwashing, when you are manipulated into doing something, right? Brainwashed. Insidious manipulation. Insidious as a word means what? Insidious hota hai when something spreads so gradually that it is not noticeable, but it can cause immense harm. Another word could be stealthily. ठीक है, when a thief enters your house, he or she enters in a stealthy manner. That means जो movement होता है ना, that is not noticeable. So अंदर ही अंदर कुछ तो वो massive harm कर रहा है, but it is not noticeable on surface. So that is insidious manipulation. And repression in the technological society. The author says that the debates which are happening about how big data is controlling our behavior, it is very similar to the Cold War era anxieties, where a lot of brainwashing happened and there was insidious manipulation. That means there was manipulation, but it happens in such a stealthy fashion that people were not aware of it till the damage was done. And
Repression is when you are there, it's domination, suppression. Okay. In his book Psychopolitics, Han warns of, of one of the sophisticated use of targeted online content, enabling influence to take place on a pre-reflexive level. So there's this author that we are referring to, and in his book he is discussing about how technology is used to target, right, and enabling influence to take place on a pre-reflexive level. Pre-reflexive level matlab, simply if I have to explain it, obviously it has an in-depth meaning when you read through it, but let's say you're watching a movie and you enjoyed the movie but you don't know why exactly. So that means कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो ऑन सरफेस हो तो रही है बट उसका कंप्लीट अवेयरनेस शायद नहीं है, सो दैट इज प्री रिफ्लेक्सिव. ठीक है. So he's talking about how there is like we are continuously targeted online, right? There's some kind of influence, but probably we are not really that aware of it. Okay, we don't know what is happening exactly on our current trajectory, like on our current path. Freedom will prove to have been merely an interlude. So he has a very strong opinion that if we continue on this path, so freedom is just going to happen at intervals, right? We may not even realize when our sense of freedom and privacy have been tampered with. We'll be unaware. So that is pre-reflexive. कुछ तो हो रहा है on surface, but we are not really aware of it, right? We are living the process but we are not aware. Okay. So freedom will prove to be an interlude. मतलब ऐसा हमें लगेगा that this freedom we are having a very temporary control over it, like there's an interval of freedom that we have. बाकी टाइम हमें कुछ तो ऐसा कंट्रोल कर रहा है जिसके बारे में we may not be completely aware. And in this case he's talking specifically about big data and this online targeting stuff. ठीक है. The fear is that the digital age has not liberated us but exposed us. So he feels that the digital age, instead of giving us freedom, instead of liberating us, it has actually exposed us, right? By offering up our private lives to machine learning algorithms that can process masses of personal and behavioral data. So ye line is very very it's very evident today, and it's a very contemporary topic of discussion how AI is like really taking over. अभी एक चीज ध्यान रखो, आई हैव गिवन यू द एग्जांपल ऑफ एआई जस्ट टू एक्सप्लेन, बट पैसेज में एआई नहीं है, पैसेज में बिग डेटा है. सो कभी कभी ये वर्ड्स भी बहुत स्पेसिफिक होने बहुत ज़रूरी हैं, राइट? आई एम गिविंग यू द एग्जांपल ऑफ एआई जस्ट टू मेक इट सिंपलर, बट हियर स्पेसिफिकली वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट बिग डेटा. ठीक है. सो क्या होता है, we are actually becoming objects of training those machine learning algorithms. Our behavior, our pattern of like our pattern of behavior, our social interactions, the way in which we behave, we live, we are actually becoming objects of training. So the author feels that the fear is that we are not like free because of these technological advancements, but rather we've been exposed in a way in which we may not be even completely aware of. ठीक है. In a world of influencers and digital entrepreneurs, it's not easy to imagine the resurgence of a culture. Resurgence is revival. So ये जो पूरा एज है ना अभी influencers का, digital entrepreneurs का, so it's not that easy to imagine that we'll have a revival of culture engendered through disconnect and disaffiliation. Engendered मतलब होता है something, it's the cause of something, so something that causes something to happen. So it's not easy to imagine revival of a culture through disconnect, where people are not connected. Disaffiliation also means dissociations. Not easy to imagine this kind of culture, but concerns over the threat of online targeting, polarization and big data have inspired recent polemics about the need to rediscover solitude and disconnect. Polemics मतलब क्या होता है? It's a speech of it's a piece of writing or a speech that actually criticizes something, or it presents a controversial opinion of something, right? So that is polemics. तो यहाँ पे ना इस particular
पैराग्राफ को अगर मैं देखूं, सो मे बी इट इज डिस्कसिंग समथिंग कंटेम्प्ररी, बट जो वर्ड्स है ना, दे आर नॉट वेरी इजी, and specifically when you start discussing about behavioral science, it becomes very nuanced. ठीक है, so be careful with such passages. If you're not somebody who's comfortable, the chances of getting it wrong is very high. So last line क्या बोल रहा है कि probably we are we are creating a culture, and it's about disconnect and disassociation, so disaffiliation, right? So, and it's not easy to imagine this revival of culture which is actually caused by dissociation and disaffiliation. And this online targeting polarization matlab kya, when you have two completely opposite polar views, that is polarization. And big data, they have inspired this recent polemics. So polemics is basically a speech or a discussion or a piece of writing which is critical, right, which is critical about the need to rediscover solitude. So we need to find our own sense of peace. Solitude is serenity, your sense of peace when you are away from interactions with your crowd. Okay, अभी ऑप्शंस देखते हैं. rather than freeing us, digital technology is enslaving us. Very strong word. कहाँ पे लिखा है it is enslaving us? कहीं पे भी नहीं लिखा है ना. It is enslaving us by collecting personal information and influencing our online behavior. ये तो partly correct है that they are collecting information and they are influencing our behavior. But enslave कहाँ पे लिखा है कि उसने हमें enslave कर लिया है, like totally we are the way in which we behave is totally being controlled. ऐसा नहीं लिखा है ना. enslaving is a strong word. सो ये नहीं हो सकता. इतना स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हम नहीं दे सकते जब तक वो पैसेज की टोनालिटी को मैच नहीं करे. ओके, with big data making personal information freely available, ये तो लिखा था, we are being exposed, and because of big data, the debate on the nature of freedom and need for privacy has resurfaced. ये ना एक बहुत ही सिंपल वे में लिखा गया है, but it makes sense if you read the last line. They have inspired recent polemics about the need to rediscover solitude and disconnect. So the debate on the nature of freedom and need for privacy, इसको ही वो एक डिफरेंट वे में लिखा गया है, ये वाला चीज रीसेंट पोलेमिक्स. सो अगर आपको ये वर्ड का मतलब नहीं पता ना, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए. सो कभी कभी वोकैब काम में आता है फॉर पीपल हु आर इन्वेस्टिंग टाइम इनटू वोकैब एंड देन दे फील कि क्या ही जरूरत है कैट में वोकैब का. है जरूरत, मे बी नॉट लाइक वेरी एविडेंटली, बट ऐसी जगहों पे जहाँ पे आपको एक ईजियर ट्रांसलेशन पता होना चाहिए. So polemics, like I discussed, it's controversial or it's critical. So वहाँ पे एक word use किया गया है debate, when you could have controversial opinions or you could have contrasting opinions. ठीक है. So डेटा तो सही है यहाँ पे, जो ऑप्शन बी में लिखा गया, जो इन्फॉर्मेशन लिखा गया वो गलत नहीं है, बट कंपैरेटिव एनालिसिस अगेन देखते हैं और क्या क्या है. Notion of freedom and privacy is at stake in a world where artificial intelligence is capable of influencing behavior through data gathered online. ठीक है, गलत नहीं है जो एसेंस में लिखा गया, दैट इज नॉट रॉन्ग, बट अगेन से यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज किया गया है. ठीक है, और हमारा पूरा डिस्कशन ना बिग डेटा के ऊपर था, और एक ऑप्शन है जहाँ पे बिग डेटा मेंशन्ड है. सो I have a better choice at hand. So that is why I am rejecting C, although ये पूरी तरह से गलत नहीं है, इन एसेंस सही जा रहा था, it's on the correct track. ठीक है, but obviously I have a better choice, so I am rolling with that. अभी D क्या बोल रहा है? Role of technology in influencing public behavior is reminiscent. Reminiscent is something that gives you a past memory, so a way of remembrance. Remembrance. ठीक है, reminiscent, so it reminds you of something, of the manner in which behavior was manipulated during Cold War. ये तो एग्जाम्पल था ना, ये डिस्कशन थोड़ी ना था. कोल्ड वॉर के साथ क्यों कंपेयर किया गया था? ताकि हमें ये समझाया जा सके कि उस लेवल के ब्रेन वॉशिंग हो रही है, इंसिडियस मैनिपुलेशन हो रहा है, सप्रेशन हो रहा है, बट ये कोर आइडिया थोड़ी ना था, ये तो पार्ट ऑफ द स्टोरी था. ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन फिर क्या है हमारे पास? ऑप्शन बी. This I would definitely rate as a tricky question, slightly on the difficult side, just because
पैसेज में भी कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, एंड उसको जो ट्रांसलेट करके जो एसेंस में डाला गया ना, इट्स नॉट वेरी इजी टू कैप्चर दैट. कभी कभी नहीं समझ में आ सकता अंडर एग्जाम कंडीशंस, बट ठीक है, इफ यू कीप प्रैक्टिसिंग डिफरेंट questions with different layers of difficulty, you'll get comfortable with it, right? So fine, that's okay. I hope you have understood this. ठीक है, I've spent a lot of time. So next question पे move करते हैं. Okay, ठीक है. This looks like a good one to go ahead with, considering the length of the passage and the options. देखते हैं, थोड़ा सा skimming कर लेते हैं पहले. Museum, artwork, objects, venerable. वेनरेबल, ये वर्ड एक और मैंने क्वेश्चन में बताया था आप लोगों को. द क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू घी. ठीक है, एक प्रीवियस स्लॉट के क्वेश्चन में, वेयर घी इज वेनरेबल टू आवर कल्चर एंड स्टफ, वहां पे मैंने आपको बताया था वेनरेबल मीन्स रिस्पेक्टेड, राइट? समथिंग दैट इज ऑनर्ड एंड रिस्पेक्टेड. वार्निशेस, क्रैक, वॉर्प. ओके, चैलेंजिंग, मोरालिटी. कुछ तो ये कैप्स लॉक में है ना, लाइक कैप्स लॉक एज इन, यू नो, इट्स रिटन इन दैट समथिंग दैट इज वेरी स्पेसिफिक. अच्छा, ये पूरा नाम ही है ना, फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी ऑफ डेथ इन द माइंड ऑफ समवन लिविंग. ये पूरा नेम ऑफ द बुक है. तो स्किमिंग करने के बाद मैं ये नहीं पढ़ रही हूँ जब मैं ओरिजिनल पैसेज पढ़ूंगी, ठीक है, बिकॉज मैंने स्पॉट कर लिया है. इनहेरेंट वाइस, ठीक है. 91 रिजल्ट, रिंकलिंग. तो बहुत सारे मुझे ऐसे वर्ड्स हैं ना जो लाइक रिपेयर रिलेटेड दिख रहे हैं. वार्निशेस, डिस्कलर, क्लाउडिंग, रिंकलिंग. तो एंड देयर समथिंग अबाउट आर्टवर्क. तो कुछ इसके अराउंड हो सकता है. अभी ऑप्शंस में क्या है? मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, म्यूजियम, आर्टवर्क. सी, डीजेनरेशन कुछ तो रिपेयर रिलेटेड है, ठीक है. म्यूजियम, आर्टवर्क. म्यूजियम, आर्टवर्क, डीजेनरेशन, रिपेयर, कुछ इस तरह से है ना, उसी को शायद डिस्क्राइब किया गया है. टाइमलेस आर्ट, ट्रेजर, ठीक है. डिटेरियोरेशन, हाँ उसी के अराउंड है ना मोस्टली, ठीक है. गुड वन, अच्छा है. लैंग्वेज तो इजी है. अभी पढ़ते हैं. देयर इज अ कॉमन आइडिया दैट म्यूजियम आर्टवर्क्स आर समहाउ टाइमलेस ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल टू एडमायर फॉर जनरेशंस टू कम. यस, दैट इज हाउ वी लुक एट इट, राइट? कि म्यूजियम में जो आर्ट वर्क है, they are timeless objects, right? So it is going to be there forever and ever for us to visit and admire. ठीक है, फर्स्ट लाइन तो यही बोल रही है. But many are objects of decay. So yes, they are objects to admire. They have a lot of value attached to it. Let's say, ठीक है, they are timeless in that way. But they are also objects of decay. Even the most venerable, most respected old master painting don't escape. So क्या क्या हो जाता है? Pigments discolor, vanishes, crack, canvases warp. So there's a lot of damage or decay that happens to even the most respected pieces of work, venerable. This challenging fact of art world life is down to something that sounds more like a thread from a morality tale, inherent vice. So yeah, this is something that is very reminiscent. It reminds you of how life is, right? It's like uh, there is a certain lifespan to everything that is living, and then they undergo this process of decay, and probably there is resurgence, there's revival in a new form, right? This is how we describe the thread of life, this thread from a morality tale. Sorry, morality, thread from this. So ठीक है, so that is how you describe life to be this entire life cycle of something. So it's comparable to that. ठीक है. Daminhurst's iconic shark floating in a tank, entitled, जो हमने skimming कर लिया, is a work that puts a spotlight on inherent vice. ठीक है. क्या था ये inherent vice? क्या कैसे, like how did this particular person, Damien Hirst, it's iconic, right? Shark floating in a tank. So what did he try to prove through this piece of work? When he made it in 91, Hirst got himself in a pickle by not using the right kind of pickle to preserve the giant fish.
So get into a pickle is to get into a tricky situation, or something that puts you, makes you uneasy, right? You are in a situation that makes you uneasy, so you are in a difficult situation that way. So what did he do? He got himself in a tricky situation, got himself in a pickle by not using the right kind of pickle to preserve his piece of art. So his piece was this shark floating in a tank. So obviously you need some preservatives to, keep it safe, to keep it in the right kind of condition for a long time. So he did not do that, so that's why he was in a pickle. The result was that the shark began to decompose quite quickly, its preserving liquid clouding, skin wrinkling, unpleasant smell wafting from the tank. So, uska result kya hua? Obviously, all sorts of decay, your indications of decay or degeneration started appearing. So, the preserving liquid started clouding, became frothy probably, skin of that shark started wrinkling, and there's this unpleasant smell from the tank in which it was kept. So ye last few lines, so probably it's like an example to show about this tale, that this mortality tale that we were discussing about, that how a life cycle is. So क्या key ideas आपको याद रखने चाहिए after you've gone through? So mentally when you are making notes, क्या key ideas हैं? We are given one example at the very end कि कैसे ये like it is put into perspective about the timeless piece of art also go through this process of decay. And we look at museums as in, they are the places where things have to be preserved for lifetimes to come, and we visit there and to take a look at objects, timeless objects, and we admire. But they also have their own life cycle, right? These objects also have their own life cycle, and they have their process of decay as well, right? So it's not really as timeless as we make it to be. Correct? ठीक है, चलो ऑप्शंस देखते हैं. Museums are left with the moral responsibility of restoring and preserving the artwork, since artists cannot preserve their work beyond their life. This is a very wrong way of putting forth an idea. We just know about one artist who was not able to preserve his piece of art. Can we say that with certainty about all the artists who have lived so far? Nahi, we can't. So इसीलिए जो last line है ना, that artists cannot preserve their work, it's a very blatant way of referring to an entire collective. So this is a very generic statement. Always be careful of such statements जहाँ एग्जाम्पल एक चीज का दिया रहता है और उसे जनरलाइज कर देते हैं पूरा उस कलेक्टिव के लिए, वो कभी आंसर्स नहीं होते. ठीक है, इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा रिजेक्ट कर सकते हैं. ओके, artworks may not last forever. They may deteriorate with time, and the challenge is to slow down their degeneration. Obviously, ये challenge के बारे में हमने बात किया था ना. Challenging fact of art world life is down to something that sounds like thread from a morality tale inherent wise. So ये जो degeneration का process को slow down करना, ये एक बहुत बड़ा challenge है for these museums. So artworks may not last forever. This is the entire discussion, that they are not as timeless as we make them to be, and they can deteriorate with time. So the challenge is to slow down that degeneration. Key ideas तो यहाँ पे सही दिख रहे हैं. ठीक है, उसके बाद देखते हैं. Role of museums has evolved to ensure that artworks are preserved forever in addition to guarding and displaying them. कहाँ पे लिखा है कि roles of museums have evolved to ensure this? No, it's not written like that, right? It just says that like even the most respected pieces of art, they undergo degeneration. It's not written that how the roles of museums have evolved to ensure that they guard it forever, and in addition to displaying them, they are also going to guard it forever. इस तरह से नहीं लिखा हुआ है ना ये तो नहीं हो सकता. We have a better choice there, which also matches the tonality of the passage, right? Museums have to guard timeless art treasure from intrinsic defects such as deterioration of paint, polish and canvas. ये तो बहुत ही specific हो गया ना कि ये सारे जो intrinsic defects है उनसे obviously they have to guard these like art treasures. वो तो है, that goes without saying. But ये जो timelessness का बात है ना, that artworks may not last forever, ये बहुत important चीज है. इसी के बारे में सारा discussion है कि
जिसे हम बहुत टाइमलेस समझते हैं ना, आर्टवर्क्स आर समहाउ टाइमलेस ऑब्जेक्ट, दिस इज अ कॉमन आइडिया, बट एक्चुअली दे आर नॉट, दे ऑल्सो अंडरगो देयर प्रोसेस ऑफ डिजेनरेशन एंड डीके, एंड द चैलेंज इज टू प्रिजर्व और स्लो डाउन, प्रिजर्व देम और स्लो डाउन दैट डिजेनरेशन। सो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, and because we have to bring forth this idea that artworks are not as timeless as we make them to be or we assume them to be. So B looks like the best choice out of the options available to us, ठीक है। This could have been a little tricky, although sentences like simpler हैं, essence में समझ में आ रहे हैं, but options I think close थे, it's not very easy to reject, at least between B and D थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता था, बट व्हेन यू टेक बर्ड्स आई पर्सपेक्टिव, एक ड्रोन व्यू लोगे तो आपको पता लगेगा दैट बी समराइजेस दिस बेटर कंपेयर टू डी, ठीक है। डी इज टू स्पेसिफिक अबाउट टॉकिंग अबाउट दीज डिफेक्ट्स, डिफेक्ट्स तो दे आर जस्ट अ वे ऑफ मेकिंग यू पीपल अंडरस्टैंड, बट व्हेन वी समराइज वी मे नॉट गो इनटू द डिटेल्स, बट वी टच अपॉन द की आइडियाज, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। All right, so 3 questions we had in the slot, we've discussed all 3. I hope you've understood. So keep practicing and keep practicing questions of different difficulty levels, okay, just to be confident and so that your sense of question selection improves with time, right? I hope you've understood and keep practicing, and I'll see you in the next video. Thank you so much.